नमस्ते सर। नमस्ते। What was we discussing? Sir, Heckscher-Ohlin theory. Heckscher-Ohlin theory, theorem 2. Okay. Yes, sir. theorem 1 हो गया है ना? Yes, sir. 1 हो गया, आज सेकंड करवाना था। 2 करना है। Yes, sir. theorem 1 है factor in domain differences is necessary for international trade. Factor in domain differences in two countries is necessary for international. Theorem 2, factor price.
factor price rises when international trade starts. Between two countries. But in final stage, there is factor price equalization. Factor price equalization between two nations. In the beginning, factor price will rise because your local factor is now demanded at international level. Your labor is demanded in different countries. So price of labor will rise. Your capital is demanded in different countries. Price of capital, interest rate will rise. But this will be in the short run. Gradually, when all over the country there is international trade, there is exchange of goods. So once factor price rises, but later on factor price will remain stabilized at some level. And therefore, when international trade is started, wage rate will increase. Suppose a painter in Madhubani, Bihar, demanded painting in France. This is a real example. Sita Devi has something name. She belonged to Rathi in Madhubani. And Madhubani painting has become international when that international painting was put into International France painting competition. Then the Bihari lady received many awards by our government and received a recognition. Mithila Express was a new train run at that time from Delhi to Darbhanga. All Madhubani arts, Madhubani painting was used in that train. And it has an international market also for painting. But when saturation level reached, the price rise of the painting stabilized. There are many followers of that painting in France, in other countries, and they also developed same painting. And now the continuous rise in the price of painting gets stabilized at some high level. That is called factor price equalization. In the initial period, factor price rising.
due to international trade. But when international trade continued for a longer period, it will lead to factor price equalization. This is the second theorem developed by Ohlin. We can see here this is production possibility curve. This is domestic trade. This is international trade, international price. Country was at E. Now country is at F. And E is point of equilibrium in production in closed economy. But in open economy, equilibrium in production will be at F. There will be international specialization. More factor price, more profit, and so there is factor price rising. This leads to a specialization in the production of exportable goods. And E shifted to F. Because international price line is tangent at F. PI international price. PI is international price. PI is international price. PI is international price. Which is tangent to production possibility curve at F. This is the case of international trade. In the beginning, domestic price PD is tangent to production possibility curve. This is production for domestic trade.
production for domestic. This is production for domestic trade. But F represents international trade. And due to a specialization, there is more production. Suppose this is wine. So more production of wine. If wine is to be exported. How can you know it? You can know it. This is distance of wine after international trade. And this is distance of wine, domestic trade. Under domestic trade, wine production is less at E. International trade, wine production is more at point F. It is due to a specialization, gains from a specialization. Gains from a specialization, country will specialize in the production of wine, and more export will be done. Country will move from lower indifference curve U1 to higher indifference curve U2. Due to international trade. Due to international trade, country will move from E to C. From lower community indifference curve U1 to higher community indifference curve. From lower indifference curve, country will move to higher indifference curve. Is it clear, Abhishek? That we have seen in gains from international trade also. Yes, sir. No sound. Abhishek, there is no sound from you. Sir, am I audible? Yeah. Sir, I was saying that how factor price is getting equalized means
wage rate becomes equalized between the two nations and interest rate is getting equalized between the two nations because we have assumed labor and capital are the two factors. Here we have seen that there is increase in their level of satisfaction to the community indifference. But sir, mathematically, how can we prove it? Because the international price line denotes the price of the commodities of good X and good Y. But how to show that the relative factor price, that is wage rate and interest rate are getting equalized? Because when two PPC are interacting, the interest price line becomes tangent to the two production possibility curve. When international trade stabilizes. In this diagram, you have you get it. This diagram. Yes, sir. This diagram shows that there is increase in production after international trade. That increase in production is due to attraction for higher price. Higher price for their product. Yes, sir. That is, in next diagram you will see what you want. This diagram is clear that country will get more. Yes, sir. In Heckscher-Ohlin, what we see that this is wine and cloth, and this is wine and cloth. Two nations. And this is called international trade, different position of isoquant. Factor price let us take it wage rate. So wage rate at E point, low wage rate, and in F point, high wage rate. Due to international trade, what will happen? Country will move from E to F in the previous diagram. The previous diagram, country moved from E to F, production equilibrium. That is represented here by OO dash line. Different points after international trade. Country will move from E to F in the first diagram which we have seen. PT elsewhere shows both diagram and says that the both diagram should be taken into consideration simultaneously, A and B. Suppose that is diagram A,
and its equilibrium E and F is transferred on OO1. And this is a P1, P2, that is factor price line. Mm-hmm. So there is shift in factor price line, and wage rate will rise to higher level. Suppose this is wage rate W0, then this wage rate will be W1. W0 and W1, wage rising. This may be taken as interest rising. Wage and interest both are considered as factor price. So this shows that shifting after international trade, there is a rise in factor price. That is the first part of the theorem. Rise in factor price if international trade is started. If international trade is started, this will happen. Sir, my question is, factor price rises in the domestic economy. For example, for the nation one, it moves from point E to point F on the production possibility curve. There will be rise in factor price, no doubt. But the theorem says that there will be equalization in the factor price. That means that is the next step. This is the initial stage. Yes. That there is shift from domestic production to international trade specialization production. Yes, sir. And in this case, what will suddenly there is a boost. And you might be knowing that it was said that in Bangalore, अगर आप सिक्का उछालिएगा और नीचे गिरेगा तो किसी इंजीनियर के सिर पर गिरेगा. ये एग्जाम्पल दिया जाता था कि इतना इंजीनियर प्रोड्यूस हुआ और दे ऑल एब्जॉर्ब बैंगलोर. और a time has come that engineers shifted to IAS, engineers shifted to other specialized job, engineers shifted to MBA and then shifted to other job rather than the administrative job, engineering job. Again, the pace of development of the country decided that how much engineer will be needed. When their projects are flop, then the recruitment for engineer become stagnant. So many dams started, but Paryavaran environmentalists, they were stopped it. Many projects could not be completed within a stipulated time. 5 years had taken 15 years and even not completed. So, boost in engineering and medical. Now it had turned down. And factor price will rise, no doubt. In the initial stage, factor price will rise. This is the second theorem, first part. Second theorem, first part. Second theorem, second part, that this will not hold true in the long run. Gradually,
factor in disguised form in commodity exported to different countries. It means labor is not only specialized to the particular country. Labor imbibed in commodity, and commodity reaches to different countries. In that way, everywhere there will be tendency towards factor price equalization. If products are reaching there without any differences, without any restrictions, which he has, Ellsworth has shown another diagram, equalization. And that finally factor price equalization will take place. Finally, factor price equalization takes place. Look here. One diagram is drawn. Suppose this is labor and this is capital. In this diagram, there is abundance of capital and a scarcity of labor. Another country has this situation, that abundance of labor and a scarcity of capital. Here capital is K1, here capital is K2, here labor is L1, here labor is L2. So this is differences of the factors in two nations. What will happen? That labor will be exported in terms of goods. Cheap commodities are exported through labor. That labor, in fact, labor is not exported, but the product of the labor is exported. In disguised form, labor is exported. And gradually, capital, which is very shy to coming to underdeveloped country. Now, an abundant capital will flow towards underdeveloped country where capital is not available. Then capital flow will also change. And ultimately, what will happen? That both nations will have equal amount of labor, equal amount of capital. That we can draw like this. This distance and this distance equal. Finally, there will be international line. Red line is international line. Red line is international line. Due to international trade, factors of production are transported to other nations in disguised form under commodity and services. बिल गेट कहाँ है और उसका बनाया हुआ चीज पूरे वर्ल्ड में छा गया. बिल गेट इज एवरीवेयर. बिल गेट का स्टेटस क्या है? बिल गेट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देता है एज ए स्टेट. उसका हस्ती क्या है? एज ए स्टेट. जब तू है एक इंडिविजुअल. देखिए इतना कैपिटल उसके पास है और फॉर सोशल वेलफेयर पर्पस वो देता है.
बिहार भी आया हुआ था यहाँ देखने के लिए कि दिए हैं तो उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं। तो रेड लाइन जो है दैट इज द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। बोथ नेशन will have same factor price. What will be upon the equilibrium? Say that isoquant. Isoquant, you take this point and this point. Again, you take this point and this point for other nation. This is isoquant of Portugal, and this is isoquant of England. Q, and this is Q. And both are in equilibrium at point A and A1. Previously, it was at B1, B. Due to international trade, domestic price factor price line of two nations will merge into one that will be the factor equalization price line. Red line is factor price equalization. Red line is factor price equalization. Factor price equalization.
Domestic price factor price line will be different. One has more labor, less capital, another has more capital, less labor, another has more labor, less capital, another has more capital, less labor, one has more labor and less capital. So this situation will be individual situation of the country before international trade. When international trade will start, it will lead to export of the abundant factor wrapped in commodity. Commodity is visible, but labor is imbibed in it. Capital is imbibed in it. Therefore, what happens? That gradually a time will come when there is free trade, no interference by the government. What international trade organizations want, there should be no restrictions. Domestic goods and foreign goods are equally acceptable in the country. Gradually, our agriculture is being substituted by other commodities in different states. Punjab is also reducing wheat production and increasing the production of long staple cotton and other grains. Marwa, ragi, that was inferior grain. But nowadays it is used in biscuit. Britannia biscuit with ragi. Such type of things has led to diversification in agriculture. Likewise, in international trade, there will be continuous inflow and outflow of factors till the factor price is equalized. स्टील सीट्स जो है कार वाले को खरीदना है, वो जर्मनी से खरीदे या फ्रांस से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, उसको सेम रेट लगे. This has led to specialization also. So Heckscher-Ohlin thought that price differences will lead to international trade. And when international trade is at a mature stage, then the boundary of the country really vanishes. And the whole world will be a market. And there will be one international factor price line on which different nations will get equilibrium. So this is called factor price equalization. This is called factor price equalization.
Thus, we conclude that in the first stage, factor price differences will lead to international trade. Sir, domestic price differences, no? Domestic price differences, first thing, the first stage, domestic price differences will lead to international trade. Thereafter, both nations start export and import. This will lead to factor price increase. In both nations. Factor in disguise form in commodity. Factor in disguise form in commodity reaches different countries. Reaches different countries. And lastly, taking two nations assumption, lastly, taking two nations assumption, there is attainment of factor price
equalization in two nations. This is called Heckscher-Ohlin theorem. Of international trade. Abhishek, Yes, sir. whatever topic is left, उसका एक हमको लिस्ट Okay, बना sir. ताकि हम उसको ऑर्डरिंग करके पढ़ावे. ठीक है सर, आज शाम को भेज दूंगा सर. ओके सर. अभी इस क्लास में एक लड़का इंटर किया है, आकाश चौहान. आकाश चौहान, हेलो. हेलो सर, नमस्कार सर. हाँ, क्या आपका परिचय क्या है? सर मैं सर एमए इकोनॉमिक्स हूँ सर, पीएचडी परसुइंग. मुरादाबाद से आप ही हैं क्या? हाँ जी सर. हाँ जी. मुरादाबाद से? हाँ जी सर. आकाश. अच्छा, तो आपको जो है अकेले में आपको हमसे एक दो दिन पढ़ना पड़ेगा. ओके सर. इसमें हम इक्वेशन ही सब आपको बताएंगे, डायग्राम, ताकि क्लास के डिस्कशन में आपको दिक्कत नहीं होगी. ओके सर. आपको आपका टाइम जो है, जो पीएचडी किए हुआ है और नेट के लिए ट्राई कर रहा है, यही ना आपका केस है? यस सर. यस सर. हाँ, तो उस ग्रुप में ही डालेंगे. वहां सब आप ही के तरह का है. ओके सर. पीएचडी भी है. ये लोग कोई पीएचडी नहीं है, लोग सब इंजीनियर है. ओके सर. ये यूपीएससी का बैच है. तो इंजीनियर तो सर बहुत कॉम्पिटिटिव है. तो आपको जो है आज 3 बजे 4 बजे नया स्टार्ट किया गया है आप ही के लिए. ओके सर. ओके. तो 4 बजे से 5 बजे आपका रहेगा क्लास, समझे? ठीक है सर. फिर पीएचडी वाले लोग का 5 बजे से 6 बजे रहता है. ओके सर. आपको 2 क्लास करना है. आप ही करके ठीक से रहिएगा. ठीक है सर. 2 क्लास लगातार आपको करना है. कर पाइएगा ना? यस सर, बिल्कुल. हाँ, और ये फोटो नहीं लगा करके आप अपना चेहरा ही लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा. यस सर, बिल्कुल. कि भविष्य हम लोग कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फेस टू फेस तो मिलेंगे, बिल्कुल सर. है ना? और इसमें आप श्योर रहिए कि यू विल गेट व्हाट यू वांटेड टू गेट थ्रू योर हायर लेवल. पीएचडी आप हैं, ये बहुत अच्छी बात है. ये हमारे कंट्री का दुर्भाग्य है. पीएचडी वाले लोगों को तो तुरंत इनरोल करके टीचिंग में बहाल करना चाहिए. प्रोसेस ऐसा रखे हुआ है कि पीएचडी किए हुए हैं और वो विरोध में आके कन्हैया कुमार जो है पॉलिटिशियन बन गया. यस सर. डॉक्टर कन्हैया कुमार हो गया. तो जेएनयू में लेक्चरर भी हो सकता था. बिल्कुल सर. लेकिन स्कोप ही नहीं है. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सैकड़ों स्टूडेंट हमारा पढ़ाया हुआ है. अभी दिल्ली में कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट वहां लेक्चरर नहीं, लेकिन सब टेम्पोररी है. फॉर द लास्ट 6 ईयर 7 ईयर्स, कोई 10 ईयर से टेम्पोररी. अभी बिहार में लेक्चरर का पोस्ट परमानेंट निकला था,
तो वहां से 10-12 लड़के अप्लाई किए थे और सब लोग ज्वाइन कर लिए बिहार में, क्योंकि वहां कोई देख ही नहीं रहा है, टेम्पोररी है, सैलरी आपको देगा लेक्चरर का, टेम्पोररी रखेगा, तो बहुत सारा फैसिलिटी। और लाइफ जो है वो शॉर्ट टर्म का है, कोई ऐसा लाइफ नहीं है कि 1000 वर्ष तक जिंदा रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद एज भी जो है ऑफर ले, उसके बाद आप लेक्चरर बन नहीं सकते, जैसे 40 साल या कुछ डेट लिखे हुआ है, उसके बाद आप लेक्चरर नहीं बन सकते। जी सर। ऐसा कहता कि ठीक है जितना बाद में आप बनिए, रिटायरमेंट का एज फिक्स रहता है। तो हम लेक्चरर बने एट द एज ऑफ जस्ट 21। ओह माय गॉड। कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आई 45 years एज ए प्रोफेसर, एज ए रीडर, एज ए लेक्चरर, ये सारे को अवेल किए, और उसके बाद भी अभी 50 साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो यूटिलाइज हो गया पूरा लाइफ हमारा टीचिंग में, इसलिए हमको कोई शिकवा शिकायत कंट्री से नहीं है। लेकिन हमारे तरह के बहुत सारे लड़के हैं जो टॉप किए हैं, अब बैठे हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट। बेस्ट इंजीनियर है, अब वो जो है यूएस चले गए, हम जाके वहां देखे तो वो जूता बेचता है। जूता का जो इंटरनेशनल कंपनी है, जो केवल आपको हवाई अड्डा पर ही जूता रहता है। हवाई अड्डा पर आप देखिएगा एयरपोर्ट पर जूता का दुकान जरूर रहता है, और उसका जूता भी जो है फ्रांस का, यहाँ का, वहां का काफी कॉस्टली रहता है। सर। लेकिन वो है आईआईटी, आईआईटी है, और पटना में वो ट्यूशन पढ़ा के जिंदा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट लिखे हुआ है उसका नाम, और उसके नीचे लिखा है आईआईटी, नीचे है नाला पर। वो पटना में नाला है, बहुत नाला रोड है, नाला है, पानी बहता है, तो वो लोकेशन अपना दिया नाला पर, IITN नाला पर। दिस इज अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑन द पार्ट ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट। मैन पावर मैनेजमेंट एकदम आप नहीं कर रहे हैं। यस सर, प्रॉपर नहीं है इंडिया में। बाकी सब मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। यस। ये सही नहीं है, मैन पावर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये क्लास जो है अभी खत्म होगा, और आपको ज्वाइन करना है कितना बजे? 4 बजे, 4 o'clock। ओके सर, याद रखिएगा। ठीक 4 बजे आप ज्वाइन कीजिएगा। 4 से 5 स्टार्टिंग शुरू हो रहा है माइक्रो, और उसके बाद उसमें आपको इनिशियल रहेगा, और फिर 5 से 6 जो रहेगा वो तो सब पीएचडी है और नेट है। नेट है तो पीएचडी नहीं है, पीएचडी है तो नेट नहीं है, और सब है दावेदार लेक्चरर के। यस सर। तो होगा, और जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा यू कैन टेल मी, उसके अनुसार हम आपको अलग से भी टाइम देके उस बात को पूरा करेंगे। नहीं जानते कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? सर रोहेलखंड यूनिवर्सिटी। है? रोहेलखंड, एमजेपी रोहेलखंड। रोहेलखंड। यस सर। हाँ ठीक है। तो आप स्कूलिंग कहाँ से किए? सर स्कूलिंग मुरादाबाद से। मुरादाबाद। हाँ जी। हाँ तो आपका तो सरकार के हिट लिस्ट पर है मुरादाबाद। हाँ जी। मेटल को एक्सपोर्ट करने के लिए, मेटल गुड्स का। यस सर। हैंडीक्राफ्ट ये वो जो है वो मुरादाबाद का फेमस था। यस सर, ब्रास सिटी। देखे कि जर्मनी में इस बात को बोल रहे हैं कि मुरादाबाद का एक से एक सामान जो है वो जर्मनी के किसी भी ड्राइंग रूम में रखा जा सकता है। यस सर। उसका टेबल लैंप है या बहुत सारा रूम में डेकोरेशन है, तो ये सब हैंडमेड है, और ये उसमें कलाकारी भी है। यस सर। तो वेरी ग्लैड टू रिसीव यू इन आवर ग्रुप, एंड आई होप दैट यू विल बिकम लेक्चरर। एज है ना आपका कमीशन का? हाँ जी सर। कितना एज है आपका? सर 29। 29। अभी इसे बीपीएससी स्टेट से लेवल में कितना एज रहता है पुनः?
सर 35 तक रहता है, 35 तक, 25, 35 नहीं 35। 25 तो अभी तो है ना आपका एज। यस सर। सर बीपीएससी में 29 40 है, कितना बोले? बीपीएससी में 40 है। बीपीएससी 40 है, लेकिन इनका हाँ। उत्तर प्रदेश में है, अच्छा, वहाँ 34 है। कमीशन में देते हैं। यस सर। यूपी सर्विस कमीशन से बैठते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ एज कितना है? सर 35 के अराउंड है सर, पक्का आइडिया नहीं है मुझे। आपका एज कितना है? मेरा 29 सर। हाँ तो बस, तो स्ट्रेटजी आप रखिए लेक्चरर बनने का, प्लस जो इकोनॉमिक्स लेकर के वहां दीजिए, कॉमर्शियल टैक्सेशन इस समय जा सकते हैं उत्तर प्रदेश। ओके सर। ब्रॉडर बास्केट होना चाहिए, बास्केट में एक ही बास्केट को नहीं पकड़ना चाहिए, अल्टरनेटिव रखना चाहिए। तो लेक्चरर तो आपको होना ही है, पीएचडी है और नेट खाली होगा, ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि इसी नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे कमीशन में, वहां निकल जाएगा। तो वहां भी आप जो इंटरव्यू में जाइएगा तो पीएचडी वाले का बहुत वेटेज रहता है। यस सर। पीएचडी लोग हैं वो हो गए अभी डीएसपी और बीडीओ ही है। एप्टीट्यूड अगर मान लीजिए पढ़ाने का ही है तो ठीक है ना। यस सर। That's all. नमस्ते। इससे का उसको बना के भेज दीजिएगा ताकि आई विल हैव मेक ए प्लान। श्योर सर। थैंक यू सर। ओके।